Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. Students, I hope you are aware of Union Bank of India SO Credit Officer notification, and today we are going to share 8 weeks study plan, right? Proper study plan हम share करेंगे. What I recommend is from Monday till Friday you should study and practice. पहली बात तो ठीक है, Monday से Friday आप पढ़ाई करें concepts की. On Saturday you should do the revision and the sectional test, and on Sundays you should take full length mock test. Along with that you should do the analysis. एक ही mock test करें एक दिन में, and then you should do the proper analysis ताकि आपको पता चल सके कि कौन से topic में आप lag कर रहे हो. So this is a weekly structure that you should follow. You should give at least 2 hours to professional knowledge because सबसे ज़्यादा weightage ही इसी का है. एंड 1 hour आप डेली पढ़ सकते हो, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश इनमें से एक पिक कर सकते हैं. एंड देन 1 hour यू शुड गिव टू द प्रैक्टिस. MCQs करिए आप डेली 1 घंटा. So 4 hours per day should be sufficient for your preparation because I think most of you are working professionals and you just have 4 hours with you for your preparation. 4 ही घंटे हैं आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए. If you are not working right now, then आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो. यहाँ पे 2 घंटे की जगह 4 घंटे दे सकते हो प्रोफेशनल नॉलेज को. डबल कर सकते हो जितना भी टाइम यहाँ पे लिखा, 8 घंटे पढ़ सकते हो डेली. सो वीकली टेस्टिंग प्लान है हमारा. जस्ट फोकस है. सो ऑन सैटरडेज यू शुड टेक सेक्शनल टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज. आप प्रोफेशनल नॉलेज के MCQs करिए, हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको. ऑन संडेज यू शुड टेक द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, राइट? So let's start with a weekly planner. On the first week, I would recommend you should start with the fundamentals of credit and financial statements, right? सबसे पहले आप गवर्नमेंट स्कीम से स्टार्ट कीजिए. मतलब मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी. गवर्नमेंट स्कीम्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. यू शुड स्टार्ट विद द गवर्नमेंट स्कीम्स. विच गवर्नमेंट स्कीम्स डिटेल में हमने अपने कोर्स में डाला हुआ है. स्टार्ट विद द मुद्रा, PMEGP, CGT, MSC, सुकन्या समृद्धि, ऑन ऑल द इंश्योरेंस स्कीम्स. ये सारी पढ़ के चलें आप. गवर्नमेंट स्कीम से आप स्टार्ट करें. 1 या 2 दिन आपको एटलीस्ट, 2 ज़्यादा दिन लगा सकते हैं, 3 दिन भी लगा सकते हैं, बट 2 days शुड बी सफिशिएंट. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर कोर्स फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स. 120-30 के तकरीबन क्वेश्चंस ही हैं, तो उसको भी पढ़ें. बेसिक्स ऑफ लेंडिंग, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, LCs क्या होती हैं, लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बेसिक सारा पढ़ के चलें. टाइप्स ऑफ बोरोवर्स इन द क्रेडिट फैसिलिटीज़. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो इम्पॉर्टेंट है. डिप्रिसिएशन का टॉपिक भी इसके साथ में आप करके चलें. डिप्रिसिएशन इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो विद इन 1-2 days यू कैन डू गवर्नमेंट स्कीम्स को. ये 2 दिन में आप कर सकते हो. एंड देन ये सारे टॉपिक्स एक ही दिन में आप कर सकते हो, साथ ही में करके चलिए. एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू कैन डू विद इन 1 day. रिविजन ही करना है. आई होप आप ऑलरेडी कर चुके हो. फाइनेंशियल रेशियोज, इट शुड बी लाइक एक दिन आपको इसमें लगेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, सारी रेशियोज आपने करके चलनी है. सो दैट वुड टेक एटलीस्ट, आई वुड से, एक पूरे वीक में आपको 2-2 घंटे अगर पढ़ना है तो आप 2 दिन दे सकते हो रेशियो एनालिसिस को. एंड एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. देन जनरल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर्स वाला, नंबर सिस्टम वाला बेसिक पढ़ लीजिए. नंबर सीरीज पढ़ लीजिए आप. एंड अलॉन्ग विद दैट एवरेजेस, रीजनिंग में पजल्स और इंग्लिश में RCs कर सकते हैं इन द वेरी फर्स्ट वीक. सो ये फर्स्ट वीक का प्लानर यही है. थोड़ा इजी चल रहे हैं अभी हम, राइट? हो सकता है कि रेशियो एनालिसिस में इट्स गोइंग टू टेक वे मोर टाइम, राइट? बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, सो इट वुड टेक मोर टाइम, राइट? इन द वीक 2, क्रेडिट अप्रेजल एंड CMA डेटा. So RBI circular for last 6 months is important, and you should start with that. Okay, last 6 months of RBI circular analysis, read it. If possible, if you have time, you should read last 1 year of RBI, important RBI circulars. So working capital chapter is important, and then there are committees related to working capital assessment, like Nayak committee, Tandon committee. They are very, very important, right? Then there are turnover methods to calculate the working capital, बहुत important है. In the capital budgeting, DSCR, IRR, NPV, these topics are important. You should be able to do some of the numericals as well, although calculators are not allowed, but
you should have basic understanding how to solve basic questions, right? Then Union Budget 2025 highlights are important. You should do data interpretation, syllogism, and clues test. That's what you can do. In the third week, I would recommend types of risk in banking, credit market, operational, various types of risk that a bank face. Then you should do Basel III norms, CRAR, Tier 1, Tier 2 capital buffers. And there are a lot of RBI circulars related to them. You should have basic understanding and you should know the circulars में क्या क्या चेंज आए हैं वो तभी समझ पाओगे अगर आपको Basel III norms का पता होगा तो. Recovery mechanisms are there. SARFAESI, DRT, Lok Adalat and IBC, we have taught that in detail in the course. Credit rating and CIBIL, and then static topics are there. Types of mortgages, hypothecation, pledge, ये सारा basic understanding पढ़ना है आपको. And if possible इसके साथ ही आप limitation law पढ़ सकते हो. Limitation law is kind of important. So along with the static banking, do the limitation law. Basics a topic है, short में a topic, right? So in the week 3, RBI circulars, you should do the practice of RBI circulars because revision of RBI circulars is very important. आप एक साल के RBI circular अगर 1-2 दिन में पढ़ रहे हो तो याद नहीं रहेंगे. That is why I mentioned RBI circulars here as well. जो आपने पिछले सेकंड वीक में RBI सर्कुलर्स पढ़े थे उसको दोबारा पढ़ लीजिए, राइट? RBI सर्कुलर्स को आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. In the fourth week, Banking Regulation Act, you should study Banking Regulation Act, RBI Act, Companies Act का basics relevant to loans, directors and charges and Negotiable Instruments Act along with amendments. Coinage Act is sort of important. आजकल बहुत सारे questions आने लगे हैं. KYC, AML guidelines, right? And then in the financial, some of the latest topics are also there. So RBI initiatives we should do. Static GK is not sort of part of it. Static GK इसका part भी नहीं है, वैसे भी छोड़ दीजिए. Sectional test लीजिए. For laws, risk, credit appraisal, you should take some sectional test, right? Week 5, priority sector lending is a very important topic. So we are doing priority sector lending in the beginning. Limits, targets and new sectors, detail में पढ़िए. Then IRAC norms are very, very important. Then government schemes like PMEGP, revised government schemes. I'm repeating government schemes. Why? Because it's retention थोड़ा difficult हो जाता है. PMEGP, CGT, MSE, CLCSS, उद्यम registration, एग्री की schemes हैं, KCC बहुत important है, KSY बहुत important है. Other schemes are there for the insurance, for the farmers, for the women empowerment, for the entrepreneurs. So you should go through these schemes. Detail में हमने course में करवाई हैं. For the export credit, pre-shipment, post-shipment credit, ECGC important है. Then RBI circulars on export finance, MSME restructuring. MSME restructuring is actually very, very important. Please remember the numbers. हर साल पेपर आते हैं. And then you should take the mock test, right? And then in the week 6, loan processing का workflow है. Documentation is important. Stamp duty, registration and the limitation law. Stamp duty act है, उसके बाद registration act है और limitation law उसको पढ़िए. Loan monitoring, credit scoring, credit appraisal की case studies पढ़ेंगे and then revise government schemes, Basel norms, laws and RBI circulars and then take a full and mock test. इतना ही पढ़ पाएंगे आप, right? So there is a buffer of 2 weeks. In these 2 weeks, whatever is pending, आपका जो भी topic pending होगा उसको पढ़िए. आई वुड रिकमेंड कि देखिए इंग्लिश का तैयारी कैसे कर सकते हैं. फॉर इंग्लिश टेक मॉक टेस्ट. वी आर डूइंग द मॉक टेस्ट. इतने शॉर्ट पीरियड में आप जल्दी जल्दी ग्रामर भी अगर पढ़ोगे उसका फ़ायदा नहीं होगा. यू शुड टेक द मॉक टेस्ट, राइट? अटेम्प्ट एज मच एज पॉसिबल. if you are attempting at least 50 RCs at the time of preparation, that should be sufficient for your English preparations, right? So Union Bank of India Assistant Manager Credit Scale 1 course is available on bankexamstudy.com at a very affordable price of, I guess, 2,999. Link is available in the description. We are providing video classes, notes, quizzes in the test series. This is our WhatsApp number where you can ask your doubts and we are going to answer all your doubts. कोई भी doubt है, दिक्कत है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हो और हम आपके सारे doubts का answer करेंगे on the WhatsApp. So list of our successful students in the past, all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I'm really happy for them and you can be one of them in the future. So कुछ भी डाउट है अगर आपके माइंड में, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछिए and write a review for us on
गूगल प्ले ऑन बैंक एग्जाम्स टुडेज मोबाइल ऐप, आप हमें एक रिव्यू भी लिख सकते हैं. दैट वुड बी really helpful for us. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.